नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मेरा नाम विपिन, आपके बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, मां नर्मदा का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही सोन और झील नदियों का उद्गम स्थल आपके अनूपपुर जिले से है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम शुरुआत करते हैं आपके जो है नेक्स्ट सेगमेंट के। फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा बेहतरीन सा टॉपिक चल रहा था। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन सबसे पहला है आपका आज रिएक्शन टरबाइन का। तो क्वेश्चन बोल रहा है हमारे स्क्रीन के ऊपर, अ रिएक्शन टरबाइन वर्क्स एट 450 rpm under a head of under a head of 120 meter. Its dia at inlet is 120 centimeter and the flow area is 0.4 meter square. The angles made by absolute and relative velocities and relative velocities at inlet are 20 degree and 90 degree, sorry, 60 degree, 20 degree and 60 degree respectively, with tangential velocity determine number A, the volume flow rate, number B, the power developed, and number C, hydraulic efficiency. Assume width at outlet is 0. Okay, now here we have to needed velocity triangle. Here it is V1, alpha 1 is equal to 20 degree, beta 1 is equal to 60 degree, relative 1 F1, U1 W1.
ये हुआ हमारा इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल रिएक्शन के केस में। U2 V2 is equal to VF2 VR2 outlet velocity ट्रायंगल। ये दो हमारे प्रमुख स्तंभ हुए। चलिए आइए देखते हैं बारे में इनके। T1 यहाँ पे क्या हो गया 1.2 मीटर and whirling at 2 is equal to 0। now फ्लो एरिया क्या हो जाएगा डियर साथियों? फ्लो एरिया is equal to pi T1 B1 0.4 and the U1 portion is equal to pi times D1N over the 60 and U1 हो जाएगा मीन ब्लेड वेलोसिटी pi times 1.2 into 450 upon 60. So here the value is to be 28.27 meter per second. Alright, now moving ahead from inlet velocity triangle. From the inlet triangle क्या हो जाएगा? Tan of alpha 1 is equal to flow of 1 whirling of 1. Now Vf1 is equal to 0.364 Vw1. Alright, now the tan beta 1 is equal to Vf1 upon whirling at 1 minus u1. So the tan 60 degree is equal to 0.364 Vw1 upon Vw1 minus 28.27. Vw1 is equal to 35.79 meter per second and Vr1 is equal to 13.027 meter per second. So after that, moving ahead to the question, first one is to be asked the volume flow rate. Volume flow rate is nothing but Q pi times of d1 v1 into velocity of flow 1, which is to be calculated 0.4 multiplied with 13.027. Now 5.211 meter cube per second. Now the second portion is to be work done per second. Work done per second is equal to rho q times Vw1 u1. Now the value is to be 1000 into 5.211 into 35.79 into 28.27. Now putting the value is to be 5.272 megawatt. Alright, now the next part, hydraulic efficiency is equal to Vw1 u1 upon G times H. So the value is to be 35.79 into 28.27 upon 9.81 into 120. So the value gives the 85.95%. Alright, alright, the question is to be done over here. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फर्दर मूव अहेड करते हैं साथियों।
ये क्वेश्चन है इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन का, इसमें डेरिवेशन टाइप का प्रूव करना है आपको। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। एन इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन, इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन discharges radially, discharges radially, and the velocity of flow, and the velocity of flow is constant and is constant and equal to the velocity of discharge, equal to the velocity of discharge from turbine, from turbine. Show that the hydraulic efficiency can be so that the hydraulic efficiency can be expressed. Okay, efficiency of hydraulic is equal to 1 upon 1 plus 1 upon 2 tan square alpha upon 1 minus tan alpha upon tan of theta. Okay, so the solution is to be, चलिए आइए सॉल्व इट डाउन करने की हम पूरी कोशिश प्रयास करेंगे। इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल बना लेते हैं और आउटलेट इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल एंड आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल का केस है। यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट अल्फा 1 बीटा 1, अल्फा 1 बीटा 1, इट्स अ V1 VF1 VR1 VR1 VF1 flow velocity U and VW1। ठीक है, चलिए नाउ फ्रॉम द कन्वेक्शन ऑफ कन्वर्जन एनर्जी एनर्जी के टर्म्स में लिखते हैं तो हो जाएगा आपका H इज इक्वल टू VW1 U1 अपॉन G प्लस
v2 square upon 2g. H is equal to vw1 u1 plus v2 square upon 2। हमको पता है यहाँ से, ये इक्वेशन का नाम दे दो। नंबर 1, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? whirling velocity 1 mean blade velocity 1 divided by g times of h, which is equals to vf1 upon vw1, hydraulic one, which is 1 upon 1 plus v2 square upon 2 times of vw1 u1। now assumption है, करेंगे vf1 vf2 is equal to absolute velocity of 2 from the inlet velocity, ट्राइंगल से हो जाएगी कंडीशन tan over the alpha 1 vf1 upon vw1 and tan over the beta 1 is equal to vf1 upon u1 minus vw1। So dancing down the track, u1 is equal to vw1 plus uf1 upon tan of beta 1 and vw1 is equal to vf1 upon tan over the alpha 1। So efficiency of hydraulic one is equal to 1 by 1 plus vw1 square tan square of alpha 1 upon 2 times of vw1 into vw1 multiply with vf1 upon tan of beta 1। Here it is the value over 1 plus tan square alpha divided by 2 into 1 plus tan of alpha 1 tan of beta 1 the beta 1 taken from a reverse tangential direction। clear cut हुआ। now further moving ahead और the next question की ओर हम लोग अग्रसर रहते हैं। ये है फ्रांसिस टर्बाइन का। A Francis turbine, a Francis turbine has a diameter of has a diameter of 1.4 meter and rotates at 430 rpm. Water enters the runner. Water enters the runner without shock with a flow velocity. Shock with a flow velocity of 9.5 meter per second, 9.5 meter per second, and leave the runner
and leave the runner without without whirl within absolute velocity of absolute velocity of 7 meter per second. The difference between the difference between the sum of static and sum of static and potential head at inlet, potential head at inlet to runner and to runner and at the exit from at the exit from the runner is 62 meter. The turbine develops 12.25 meter per second, 12.25 megawatt. The flow rate, the flow rate through the turbine through the turbine is 12 meter cube per second for the net head of for the net head of 115 meter. Find the following. Find the following. नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी. नंबर ए में बोल रहा है the loss of head in runner, the absolute velocity of water, the absolute velocity of water at entry to the runner, entry to the runner, and the angle and the angle of the inlet guide of the inlet guide vanes. Second part, the entry angle of the entry angle of the runner blades and runner blades, and the third part, the loss of head in runner. ये पूरा क्वेश्चन है जिसे आपको सॉल्व करना है.
फ्रांसिस में आपको ये याद रखना है कि आपका जो है ना, आपका एंगल जो है आउटलेट का 90 डिग्री होता है, अल्फा थीटा फाई बीटा इस हिसाब से। तो चलिए सॉल्व करते हैं आपका। ये रहा इनलेट, आउटलेट बना लेते हैं। BW1 Q1 BF1 VR BF1 BR1 P1 and the outlet one B2 BR2 beta 2 Q2. Now go from the calculation part over here. सबसे पहले हो जाएगा हमारा फ्लो वेलोसिटी ऑफ 1 कितना 9.5 मीटर पर सेकेंड। देन U1 is equal to pi d1 n2 upon 60. Now the U1 value is to be pi times of 430 into 1.4 upon 60. So the value is to be 31.52 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड हमारे पास वर्लिंग इज इक्वल टू 0 क्योंकि टरबाइन कौन सा है, फ्रांसिस है। पावर इज इक्वल टू रो जी क्यू एच। here we have the value of power 12.25 multiply with 10 raised to power of 6 is equal to 10 cube into 1 to 12 into BW1 31.52. So the VW1 value is to be 32.39 meter per second. Okay, now from the inlet velocity triangle, तो the inlet one से हमको मिलेगा tan of alpha 1 geometric relation है, VF trigonometric VW1. So here the tan alpha 1 9.5 divided by 32.39. The alpha 1 value is to be 16.35 डिग्री। कैलसी हाथ में ही रखे रहिए ना, कैलसी कैलकुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट। V1 square is equal to VW1 square
प्लस VF1 का स्क्वायर. Now the value of V1 is equal to 33.75 meter per second. Now the moving ahead, अपना आउटलेट में रिलेशनशिप मिलेगा 10 ओवर ना अभी बीटा वन 10 बीटा वन देखते हैं. 10 बीटा वन क्या हो जाएगा is VF1 divided by whirling velocity at 1 minus U1. तो the finally बीटा वन हमें जो प्राप्त होगा वैल्यू 84.77 degree. Now the third part is to be total head across the runner, head transferred to the runner and head lost in the runner. So H1 is equal to E1 upon rho g plus V1 square by 2g V1 square upon 2g plus Z1 and H2 is equal to same relationship P2 upon rho g plus V2 square upon 2g plus Z2. Now जहाँ पे हमें पता है head developed by runner and turbine, रनर बनाएगा हेड अपना H1 माइनस H2 माइनस VW1 U1 अपॉन G एंड टर्बाइन बनाएगा VW1 U1 upon G. Now the calculation part, HL is equal to हो जाएगा P1 minus P2 upon rho G plus P1 square minus P2 square upon 2G plus Z1 minus Z2 minus VW1 U1 upon G. So here after the putting values we have to get 62 plus 33.75 square minus 7 square upon 2 into 9.81 minus 31.52 to 32.39 upon 9.81. So here HL value is to becomes on the 13.49. Okay, is the final value. Easy. आपको एक काम करना है, या PM क्लास है उसे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद मित्रों को इसे पेनिट्रेट करना है. चलिए आपका सेशन इतना ही रखते हैं. जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के शिखर पर सदैव अग्रसर रहिए. यही ईश्वर से हमारी कामना है. थैंक यू. हैव अ वंडरफुल डे. थैंक यू साथियों.